Hello, hi, good evening to all. Myself Tanmay. How are you? So join first, join first. So now we start today's class. Right, question number one. Today's class question I will do questions based on straight line question based on slope. In this class question level will be basic to moderate. अगले क्लास में क्वेश्चन में मॉडरेट टू एडवांस रहेगा ओके एंड थर्ड क्लास में एडवांस टू वेरी वेरी एडवांस रहेगा ओके 3 क्लास लूँगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो क्वेश्चंस के ऊपर ओके स्ट्रेट लाइन बेस्ड क्वेश्चंस ओके स्लोप के ऊपर स्पेशली स्लोप के ऊपर डिस्कस करेंगे उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ लाइन को जंप करेंगे ओके फाइंड द slope of a line which passes which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points P0 minus 4 and B80 ओके तो कैसे करेंगे सभी बच्चे क्लास को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो ओके सब्सक्राइब करने से तुम्हारा एक फ़ायदा होगा मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा ओके तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे First, we have to find the midpoint of the question is find slope of line which passes through the origin. जो लाइन origin से पास कर रहा है and the midpoint of the line joining अब इसका midpoint निकालो इन दोनों पॉइंट का midpoint निकालो right midpoint of P0 minus 4 and so ये Q होगा ओके ये Q होगा Q 8,0 each कितना होगा 0 प्लस 8/2 माइनस 4 प्लस 0/2 जो 8/2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4/2 8/2 इज 4 ये होगा -2 ओके उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है हमको आदिल अहमद हेलो टेल व्हाट हैपेंड क्वेश्चन बोल रहा है स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द लाइन स्लोप ऑफ लाइन passes through the points 0 0 and 4 minus 2 में 0 0 क्यों लिया क्वेश्चन बोल रहा है passes through the origin is equal to
y2 minus y1. Can you explain the interaction? इंटीग्रेशन, अच्छा है इंटीग्रेशन तुम्हारा 12th क्लास में है बेटे। तो ये है क्लास 11th का क्लास चल रहा है। 12th क्लास में ऑलरेडी इंटीग्रेशन का टॉपिक कवर कर चुका हूँ। मेरा प्लेलिस्ट को जाओ, क्लास 12th का प्लेलिस्ट को जाओ, इंटीग्रेशन बाय मैथ्स विजार्ड सोमनाथ, यू राइट, and integration playlist can you see, and then click on that and see 27 class I have already taken integration. Okay, y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, so ये होगा x1 y1, ये होगा x2 y2, y2 minus 2 minus 0 by 4 minus 0. Next, so minus 2 by 4 minus 1 by 2 आंसर। ये होगा मिड पॉइंट का आंसर, ये होगा स्लोप का आंसर। ओके राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन कैसे हुआ? मैं तो अच्छा हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis रुको, positive direction of y-axis measured anti-clockwise, measured anti-clockwise। तो कैसे करोगे बताओ? बताओ बताओ। Right, solution. The line makes an angle of 30 degree makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis, positive direction of y-axis. Okay, now we have to find the angle. तो एंगल फाइंड करने के लिए नाउ द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ makes an angle of 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, that is 120 डिग्री। क्योंकि ना जब y एक्सिस से x एक्सिस आता है यहाँ पर 30 डिग्री कर देता है, बट यहाँ पर 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री 120 डिग्री
with the positive direction of y-axis, sorry, x-axis, with the positive direction of x-axis. So therefore slope of line is equal to tan 120 डिग्री. अच्छा, tan 120 को कैसे लिखो? tan 90 प्लस 30 डिग्री, दैट मीन tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस cot 30 डिग्री, दैट मीन्स माइनस √3. आंसर. लिखो. I use on this side. ओके, लिखो. कंप्लीट. Then question number 3. Find the angle between the x-axis. Find the angle between the x-axis and the line joining the points, and the line joining the points, and 3 minus 1 and 4 minus 2. Okay, सॉल्यूशन इसका लिखो. Let A 3 minus 1 and B 4 minus 2 be 2 points. B 2 points. Let Q be the angle. Right. Let, मैं इसका डायग्राम करके मैं बोलूँगा कैसे होता है. ओके. Let Q be the angle which AB makes with positive direction of x-axis. ओके, देखो ये दो कोऑर्डिनेट्स है, ओ एक्स, ये होगा एक्स डैश, ये होगा वाई डैश. बोला है कि लेट ए और बी दो पॉइंट से क्यू, ये एक लाइन एक एंगल है जो ए बी से ए बी को एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से काटता है, यानी छेद करता है. ओके.
सपोज ए एंड बी पॉइंट्स इसको पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स के साथ काटता है. ओके, ये होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स. ओके, सो स्लोप ऑफ ए बी, राइट, स्लोप ऑफ ए बी is equal to tan theta, implies tan थीटा बराबर ये होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1. स्लोप का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स. देन y2 माइनस y1 की माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1, देन माइनस 2 प्लस 1 बाय 4 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 by 1 will be minus 1. That means implies tan theta is equal to tan 135 डिग्री होता है माइनस 1. So implies theta is equal to 135 डिग्री. ओके, लिखो. सभी बच्चे क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. ओके, सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा. ओके, तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे. ओके, again question number 4. Find the relation between A and B so that A2 minus 1, B3 4 and CAB light on the same line light on the same line. तो हम रिलेशन निकालेंगे कैसे, जब ए का पॉइंट्स दिया हो, बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हो एंड सी का कोऑर्डिनेट्स दिया हो, एक लाइन में लाई करते हैं. यदि एक लाइन में लाई करते हैं, यदि 3 पॉइंट्स या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. कोलिनियर पॉइंट्स का स्लोप कितना होता है, स्लोप ऑफ फर्स्ट 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट्स. ओके, right solution, right, if A, B and C lies on the same line, then slope of AB is equal to slope of BC. That means इसका स्लोप निकालो, 4 माइनस ऑफ माइनस, यहाँ पर लिखो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 बाय x3 माइनस x2. देन y2 माइनस 1, 4 माइनस ऑफ माइनस 1, देन 4 प्लस 1 इज 5 बाय x2 माइनस 1, 3 माइनस 2 इज 1, y3 माइनस y2, y3 कितना है, b माइनस 4, a माइनस 3, यहाँ पर होगा 5a माइनस 15 इज इक्वल टू b माइनस 4, implies 5a minus b is equal to 11. आंसर लिखो. Complete. Question number 4. Sorry, question number 5. Without using the Pythagoras theorem, so that the points 4, 4, 3, 5
and -1 comma -1 are the vertices of a right angled triangle. ओके, कैसे करोगे? लिखो, फॉर सॉल्यूशन यू राइट, एक डायग्राम कर लो। सपोज इसको ले जाओ ए, इसको ले जाओ बी, इसको ले जाओ सी, ये है 90 डिग्री होगा, राइट। लेट ए 44 comma b 35 and c -1 comma -1 b 3 vertices of a triangle ABC। सो इसको दे दो 4 इसको दे दो 3 5, इसको दे दो -1 comma -1। ओके, नाउ अब इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो। फर्स्ट इतना निकालो और अगले बात मैं करूँगा। ओके, नाउ स्लोप ऑफ ए बी, राइट, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू, इसको ले जाओ x1 y1, इसको ले जाओ x2 y2, इसको ले जाओ x3 y3। सो y2 minus y1 by x2 minus x1। So y2 minus y1 5 minus 4 by 3 minus 4, and 1 by 3 minus 4 minus 1 is equal to -1. Okay, now slope of BC, स्लोप ऑफ BC कैसे निकालो? y3 minus y2 by x3 minus x2। So y3 minus y2 -1 -5 by -1 -3 -6 by -4, that means 3 by 2। Now slope of AC, y3 minus y1 by x3 minus x1, -1 -4 by -1 -4 -5 by -5 equal to 1। ओके, अब देखो किसका भी स्लोप इक्वल नहीं आ रहा है, तो अभी हम अगले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। नाउ यू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ, राइट नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ perpendicular lines, perpendicular lines, इसको दे दो m1, इसको दे दो m2, इसको दे दो m3। देखो इसको दे दो m3, इसको दे दो m2। m1 into m2 is equal to -1 according to property of perpendicular lines। m1 कितना -1, m2 कितना 1, तो -1 implies -1 is equal to -1। ओके, hence proof, therefore triangle ABC is a right angled triangle। ओके, लिखो, सभी से क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। ओके, तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे।
लिखो लिखो। Next question, right? Question number 6. Right, question number 6. Find the values of A and B so that the line AX plus BY, this is plus 45, which will be 0, makes intercepts 9 and minus 5 on X and Y axis respectively. Right solution. तुम्हारा ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं जो फ्यूचर में पढ़ाऊँगा अगले दो तीन क्लास में। छोटा सा कंसेप्ट लिखो, 2-3 क्लास के बाद मैं पढ़ाऊँगा जनरल कंसेप्ट ऑफ लाइन, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो। द इंटरसेप्ट ऑफ लाइन intercept form of a line is x by a plus y by b is equal to 1. Okay, where a is equal to 9, b is equal to minus 5. So x by 9 plus y by minus 5 is equal to 1, implies x by 9 minus y by 5 is equal to 1. 5x minus 9y by 45 is equal to 1. So 5x minus 9y is equal to 45, implies 5x minus 9y minus 45 is equal to 0. Okay. Now this gives equation 1. Now we will compare with general equation of line, that is ax plus by plus c is equal to 0. So we have to देखो क्वेश्चन में इंटरसेप्ट पॉजिटिव 9 है एंड नेगेटिव -5 है, तो यहाँ पर नेगेटिव करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाइंग -1 on LHS and RHS of equation 1, we get
That means -5x plus 9y plus 45 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो इक्वेशन नंबर ये 2 है एंड इक्वेशन नंबर 3। नाउ comparing now on comparing a is equal to -5 एंड b इज इक्वल टू 9। तुम्हारा कंसेप्ट ये एक कंसेप्ट है एंड ये एक कंसेप्ट है जो मैं अगले 2-3 क्लास के बाद पढ़ाऊंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, हाल फिलहाल तक तुम अभी याद कर लो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन बोलते हैं। इसका प्रूफ एक बड़ा सा प्रूफ होगा। मैं जो 2-3 क्लास के बाद जो इक्वेशन ऑफ लाइन टॉपिक स्टार्ट करूंगा उसके बाद पढ़ाऊंगा। ओके, इसका भी प्रूफ है, सबका प्रूफ सिखाऊंगा। ओके, तो लिखो सभी बच्चे क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे। Now question number 7. If a line is equally inclined to the axis so that its slope is plus minus 1, ट्राई करो। Solution, right? If a line is equally inclined to the x-axis and y-axis, let the angle it makes with the x-axis be theta 1, since the angle between the x-axis and y-axis is 90 डिग्री। सो थीटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा 1 होगा। ओके, देखो जब बोला था मैं एक लाइन होगा ऐसे, जब इसका इंटरसेक्शन होगा ऑटोमेटिकली वो 90 के बराबर हो जाएगा। यदि ये होगा थीटा 1, थीटा 2 कितना होगा था 90 माइनस थीटा 1। ओके, सो नाउ यहाँ पर यदि एक्स एक्सिस में एक लाइन यदि सेम हो जाएगा तो थीटा 1 बराबर थीटा 2 होगा, क्यों ना ये कॉम्प्लीमेंटरी लॉ बोलता है। सो थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा 1 इज थीटा 1, एट मीन्स 2 थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, implies theta 1 is equal to 45 degree. Therefore, slope of the line m is equal to tan theta 1, implies m is equal to tan 45 degree, implies m is equal to 1. यदि m 1 होगा, now right, if the line is equally inclined to the
axis in the opposite direction, then यदि देखो एक लाइन पे 180 डिग्री होता है, यदि 45 डिग्री एक एंगल होगा, दूसरा एंगल कितना होगा? 135 डिग्री हो जाएगा। अब इसका स्लोप निकालो, एम इज इक्वल टू टेन थीटा है, ये M1 M2 टेन थीटा implies M2 बराबर टेन 135 डिग्री, इट इज -1. So therefore slope of a line equally inclined to the axis is m is equal to plus minus of 1. ओके, एक +1 निकला, एक -1 निकला. सो क्वेश्चन था कि इफ ए लाइन इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस so that its slope is plus minus 1, hence proved. Okay, hence proved. कोई चीज़ का डाउट है बताओ. क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. Complete. Now question number 8. Now question number 8. YouTube में ब्लॉक कर दीजिए. YouTube में ब्लॉक कर दीजिए. If 3 points, right? If P, A, B, A, H0 and B0 K are collinear so that A by H plus B by K is equal to 1. कैसे करोगे? Okay. Solution. Since the points are collinear, the slopes of PA and PB are equal. That means implies y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to y3 minus y2 by x3 minus x2. Now a को ले जाओ x1 y1, इसको ले जाओ x2 y2, इसको ले जाओ x3 y3. Here write let a h0
b x1 y1, p a b b x2 y2 and c 0 k b x3 y3. सो इम्प्लाइज y2 माइनस y1, y2 कितना b, y1 कितना 0 बाय x2 कितना a एंड x1 कितना h, y3 कितना k, y3 माइनस y2 कितना y3 k है ना. सो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस k y2 माइनस y बाय a माइनस 0 देन x2 माइनस x3 a माइनस 0. सो b माइनस, देखो तुम यदि माइनस कॉमन लेकर माइनस y2 प्लस y3 बाय माइनस x2 प्लस x3 ये भी चलेगा. ओके तो b माइनस 0 b बाय a माइनस h इज इक्वल टू b माइनस k बाय a. अब मल्टीप्लाई कर लो ए बी बराबर ए माइनस एच बाय बी माइनस के. एक्सपेंड इट, दैट मीन्स ए बी माइनस ए के माइनस बी एच प्लस एच के. ओके नाउ कैंसलिंग ए बी ऑन बोथ साइड्स वी गेट 0 बराबर माइनस ए के माइनस बी एच प्लस एच के. नाउ ए के प्लस बी एच इज इक्वल टू एच के. ओके नाउ डिवाइडिंग both sides by h comma k we get a k plus b h by h k is equal to h k by h k हो जाएगा. implies a k by h k plus b h by h k is equal to 1. That means a implies a by h plus b by k is equal to 1. Proved. Okay, लिखो. Complete. Now question number 9. If the points a comma 1 1 comma 2 and 0 comma b plus 1 and 0 comma b plus 1 are collinear, then show that 1 by a plus 1 by b is equal to 1. कैसे करोगे इसको? Solution you write, since
The 3 points are collinear. Their slopes are equal. The slopes are equal. Now मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तुम प्रीवियस क्वेश्चन के मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं थोड़ा सा भी मेथड चेंज कर लूँगा। ओके, सेम रहेगा, तुम समझ पाओगे। ओके, स्लोप ऑफ a,1 ये 1 है। ओके, a,1 and 1,2 and 1,2 m1 is equal to 2 minus 1 x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 by 1 minus a and 1 by 1 minus a. Okay, now slope of 1, 2 and 0, b plus 1 m2 बराबर y2 minus y1, that means b plus 1 minus 2 by b plus 1 minus 2 by 0 minus 1 b minus 1 by minus 1, that means ये होगा 1 minus b हो जाएगा। ओके, since m1 is equal to m2, so 1 by 1 minus a is equal to 1 minus b, implies 1 बराबर 1 minus a into 1 minus b। अब इसको एक्सपेंड कर लो, 1 minus b minus a plus a b, 1 1 काट लो, ये होगा a plus b is equal to a b। now dividing a b on both sides, we get a plus b by ab is equal to ab by ab, a by plus 1 by b, b plus a, b by plus 1 by a is equal to 1, implies 1 by a plus 1 by b is equal to 1, proved। ओके, राइट। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 को भी इसी मेथड से भी तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, now question number 10. Then question number 10. Right, find y if line joining 3y and 2 7 is parallel to the line joining the points, points minus 1 4 minus 1 comma 4 and 0 comma 6 and 0 comma 6. Right solution.
सभी से क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। नेक्स्ट, since the given question is parallel, right, since the given question is in parallel, then their slope will be m1 is equal to m2. Now m1 is equal to 7 minus y by 2 minus 3. 7 minus y by 2 minus 3 minus 1, that means y minus 7. m2 is equal to 6 minus 4 by 0 minus of minus 1. Now 6 minus 4 is 2 by 1, 2. Now m1 is equal to m2, implies y minus 7 is equal to 2, y is equal to 2 plus 7, y is equal to 9. Answer. लिखो. Now question number 11. Find x if the slope of line containing the points 2, 5 and x, minus 4 is 3. How to find? लिखो. Right. Solution. Given m is equal to 3, you told to find x if the slope of line containing these 2 points is 3. m is equal to 3 given. m का फॉर्मूला क्या होता है? either tan theta और 2 points. your 2 points फॉर्मूला पर होगा y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to 3. so y2 कितना? -4 -5 by ये x minus 2 is equal to 3. ये -9 by x minus 2 is equal to 3. -9 is equal to 3 1 into x minus 2. -9 is equal to 3x minus 6. Your 6 minus 9 is equal to 3x. Implies 3x is equal to -3. Implies x equals to -1. Okay, लिखो. Next, question number 12. The vertices of a triangle ABC, the vertices of a triangle ABC are A12, B minus 4, 5 and C 0, 1. Find the slopes of the altitudes
of the triangle. लिखो. लिखो लिखो. वेट करो थोड़ा सा. तुम सब लिखो. Now write solution. एक डायग्राम कर लो. ए बी यहाँ पर सी. अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री. ये यहाँ पर कट करेगा 90 डिग्री में, ये यहाँ पर कट करेगा 90 डिग्री में, और ये यहाँ पर कट करेगा 90 डिग्री में. ओके. ए का वर्टेक्स ले जाओ 1 2, बी का वर्टेक्स ले जाओ -4,5, सी का वर्टेक्स ले जाओ 0 and 1. ओके. नेक्स्ट. एच altitude is perpendicular to the opposite sides. Now slope of BC. Slope of BC 1 minus 5 by 0 minus 1 minus 4, minus 4 by 0 plus 4 4 minus 1. So implies MBC कितना होगा? -1. Slope of then so slope of altitude from A कितना होगा? From A is equal to m1 into m2 is equal to -1, though it is a perpendicular line. Okay. 1 is -1 into m2 is equal to -1, implies m2 is equal to 1. Now slope of AC. स्लोप ऑफ ए सी कितना होगा? 1 minus 2 by 0 minus 1 by -1 is equal to 1. So therefore MAC is equal to 1. So slope of altitude from B, slope of altitude from B कितना होगा? m1 into m2 is equal to -1. a1 into m2 is equal to -1, implies m2 is equal to -1. लिखो.
Next, now slope of AB is equal to 5 minus 2 by minus 4 minus 1 minus 3 by 5. Therefore, A may be is equal to minus 3 by 5. So, slope of altitude from C. So, slope of altitude from C is equal to m1 into m2 is equal to minus 1. एक तरफ है minus 3 by 5 into m2 is equal to minus 1. Whereas m2 is equal to 5 by 3. So therefore, slope of the three altitudes are 1, minus 1, 5 by 3. And this is the final answer. Okay. लिखो लिखो Now question number 13. A triangle has vertices at 6, 7, 2, minus 9 and minus 4, 1. Find the slope of its median. कमेंट सेक्शन में बताओ मीडियन का इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं. ये है ए, ये है बी, ये बी सी. ओके, कमेंट सेक्शन में बताओ. ये 6, 7, ये होगा 2 minus 9, ये होगा minus 4, 1. ओके, a median joins a vertex to the midpoint of the opposite side. Okay. बस इतना लिखो, मैं पानी पीकर थोड़ा सा आता हूँ. ओके, एंड 1 मिनट का ब्रेक ले लो. लिखो लिखो. सर तुम लिखो. लिखो, मैं थोड़ा सा पानी पी करता हूँ. लिखो.
सब लिख रहे हो? मैं बैठ जाऊं। हाँ, शुरू करेंगे अभी। मीडियन जब क्वेश्चन आएगा सपोज राइट पी क्यू आर, जब जब मीडियन का क्वेश्चन देखे तब तब तो मिड पॉइंट निकालोगे। ओके, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, राइट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी इज इक्वल टू 2 minus 4 by 2 comma minus 9 plus 1 by 2 x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 minus 2 by 2 minus 1 minus 9 plus 1 minus 8 by 2 minus 4। ओके, यहाँ पर r बराबर ये। ओके, now slope of AR, now slope of AR is equal to -4 -7 by -1 -6 -11 by -7, that means 11 by 7। ओके, लिखो। अब इन दोनों का स्लोप निकालो, मिड पॉइंट निकालो, इसके बाद स्लोप फ्रॉम सी निकलना। ओके, ना मिड पॉइंट ऑफ ए बी midpoint of AB is equal to 6 plus 2 plus 7 minus 9 by 2। Okay, 6 plus 2 by 2, 7 plus 9, that means 7 minus 9 by 2 होगा। 6 plus 2, 8 by 2 is 4, minus 2 by 2 is 1, minus 1। Now slope of AB is P. So now slope of PC बराबर सी कितना है, -4 -1, ये 4 -1 है। 4 minus of -9 कुछ मिस्टेक क्या है मैंने, जो 1 minus of -1 -1 by 4 minus of -4, your -2 by 4 plus 4 is then -1 by 4। okay, now midpoint of AC, 6 plus -6 minus 4 by 2, 7 plus 1 by 2, that means 2 by 2, you got 8 by 2, 1 and comma 4, you got Q। okay, now slope of BQ, slope of BQ is equal to 4 minus 1 minus 9 by 1 minus 2, 13 by -1 minus 13। okay, so फाइन क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ द मीडियन, देयरफॉर स्लोप ऑफ all the medians is equal to 11 by 7 minus 13 minus 1 by 4, ये आंसर। ओके, यदि पॉइंट देकर एक ही मीडियन का स्लोप पूछेगा तो एक निकालना। ओके,
सो आज के लिए इतना ही। और भी क्वेश्चन है, और चार पांच क्वेश्चन है बेसिक्स टू एडवांस, सॉरी बेसिक्स टू मॉडरेट। उसके बाद मॉडरेट टू एडवांस क्लास चलेगा, उसके बाद एडवांस से वेरी एडवांस क्लास चलेगा, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन शुरू करेंगे। सो ये वीडियो कट रहा है, हाँ लिखो। सो सभी से क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सब्सक्राइब करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा क्लास का नोटिफिकेशन तुम जान पाओगे, जो भी बच्चे लाइव दिख रहे हैं या रिकॉर्डेड, दोनों को मैं बता रहा हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई करो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। ओके, so all of you like, share, subscribe the class. Next class I will take on Friday. Okay, bye for today.